As per officials, 3 gangsters, including shooters who murdered a man in West Delhi Burger King outlet, has in fact killed in a police encounter in Sonipat. The ACP Sanjay Bhatt has now issued a statement on the case. Listen into what he said. ये आप जानते हैं कि जून में एक घटना घटित हुई थी बर्गर किंग में, रजौरी गार्डन में, जिसमें एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 2 लोग उस बर्गर किंग में घुसकर उन्होंने गोलियां चलाकर उस आदमी को मारा था। इसकी इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस लगी हुई थी और क्राइम ब्रांच को भी टास्क किया हुआ था। क्राइम ब्रांच की सारी टीमें इस पर काम कर रही थी और एक एनडीआर की टीम जो हमारी अमित गोयल जिसके डीसीपी हैं और उमेश बर्तवाल, उनको स्पेसिफिक सूचना कल मिली कि 3 जो एक्यूज्ड हैं, 3 क्रिमिनल्स जो गैंगस्टर्स हैं, वो इस तरफ दिल्ली की तरफ आएंगे और दिल्ली में एक वारदात को अंजाम देंगे। इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया हरियाणा पुलिस के साथ और सोनीपत की एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने इनको सोनीपत में खरकोदा के पास इंटरसेप्ट किया। जब चैलेंज किया तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में हमारे लोगों को भी गोली लगी, बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी, एक आध हमारा आदमी ऑफिस स्टाफ इंजर्ड भी है। और जवाबी फायरिंग में हम लोगों ने जब फायर किया तो ये तीनों बदमाश जो थे वो ढेर हो गए। ये तीनों आशीष लालू, विक्की और सनी गुजर हैं। इन पे पहले बहुत सारे मुकदमे हैं और काफ़ी केसेस में ये वांटेड चल रहे थे। Ayush on the telecast with me. Ayush, what's the latest that's coming in as far as this case is concerned? The 3 criminals involved in the Delhi Burger King murder case, which was a gang war also, they were killed by the police in an encounter, and the special CP for crime, Sanjay Bhatia, provided details about this incident. He mentioned that in June, a person was brutally murdered at the Burger King in Rajori Garden area of the national capital, Delhi. And yesterday, the police received specific information that 3 accused criminals who were also gangsters were planning to come to Delhi to commit another crime. And this information was shared with the Haryana police and the STF team of Sonipat. Acting on this intelligence, the police intercepted the suspects near Kharkhoda in Sonipat, and upon being challenged by the police, the suspects started firing. The police retaliated, leading to a gunfight. During this exchange, some police officers were also shot at, but their bulletproof jackets protected them. However, 1 staff member sustained injuries. And in the retaliatory fire, all 3 suspects were killed. They have been identified as Ashish Lalu, Vicky and Sunny Gujar. According to ACP Bhatia, additional CP Bhatia, these individuals had multiple cases against them and were wanted in numerous other criminal activities. The police are also on the lookout for a woman who was involved in the initial murder case and are confident of arresting her soon. Over to you, Asabri. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.